chapter is consolidation, and here almost all theory parts we did. So the main derivation we did in the last class, that is Tezgi's theory of hmm, Tezgi's theory of one-dimensional consolidation. One-dimensional consolidation. So here in the beginning, I told you what are the assumptions you have to make. You go through all of this one, try to understand these assumptions. Then I started the derivation, and derivation is not that much difficult. So once you understand this one by taking two drainage spaces, you can derive it. And in the last class, we have the derivation, and that formula is dou u by dou t is equal to Cv into dou 2u by dou z square. Dou z square. U is consolidation with respect to time. Dou u by dou t is given by with respect to distance. That is dv Cv dou 2u by dou z square, where Cv, which is called coefficients of consolidation, is given by Cv is equal to k divided by mv gamma w. mv gamma w. So coefficient of volume change, and then gamma w is unit weight of water. So this much you remember, and this derivation is very important. Okay, so I think the gate timetable has been released now. So you plan the things for university exam as well as for gate exam. Study according to that. So university exam, I think most probably maybe in the second week or third week of January only. Second week, at least after 10th January only, because still we didn't have any fresh notification. So maybe like this only. So please plan the things accordingly. Okay, and you are lucky that you don't have to study maximum for university exam. So now coming to the next slide. Okay. Now, so we solved the differential equation. We solved the differential equation, that is Tezgi's theory of one-dimensional equation. So what it says that the mathematical steps involved in obtaining the solution by means of Fourier series of the differential equation of consolidation is complex one. Of course, this is not at all of your syllabus. However, the following points should be understood even without going through the detailed solution. Of course, उसके बाद उसका detailed Fourier solution है, but that is not important. But certain things you should know. When t is equal to 0, when t is equal to some value, what are the values of u, that you should understand here. So now, however, the following points can be understood even without going through the detailed solution. What are those points? First is the hydraulic boundary conditions to be satisfied by the solution of the differential equation of consolidation are. So at t is equal to 0, when time is equal to 0 at any distance z, u bar is equal to u naught is equal to pore pressure, delta sigma only. Means pore pressure is equal to this delta sigma only. This is when t is equal to 0. So remember, at t is equal to 0, u naught is equal to delta sigma dash. Pore pressure is this much only. And at t is equal to infinity, at that time u bar is equal to 0. At that time, pore pressure is equal to 0. So remember, at t is equal to infinity, pore pressure is 0. At t is equal to 0, pore pressure is equal to delta sigma. This is very important and can be asked in the MCQs. Okay, such points you have to note down for MCQs. So now at any intermediate point in between 0 and infinity, and z is equal to h, u bar is equal to 0, u bar is equal to 0. So now this is very important. If rho f denotes final settlement under pressure increment delta sigma, and rho is the settlement at any intermediate value t.
So this is the final settlement and this is in between settlement. Then the degree of consolidation. This is very important. Degree of consolidation is denoted by U in percentage. It is given by rho divided by rho F into 100. This you remember because in the maximum problems, this is going to be asked. So U percentage means here degree of consolidation. This is a degree of consolidation. So degree of consolidation is given by rho divided by rho F into 100, where rho is yes settlement, any settlement, and rho F is equal to final settlement. Suppose तुमको 20% के लिए होना है तो उस 20% पे settlement कितना हुआ, ये तो फाइनल सेटलमेंट रहता है. सो द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम फैक्टर टीवी. तो ये टीवी क्या है, टाइम फैक्टर है, और ये टाइम फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है. तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, बिकॉज तेजगीज वैल्यू डिटेल में जाने में कोई मतलब नहीं है, इसके प्रॉब्लम 100% पूछता है एग्जाम में. So these questions are to be asked in the examination. So remember, U is given by, that is degree of consolidation in percentage is given by rho divided by rho F into 100. Rho divided by rho F into 100, where rho is any settlement, whereas rho F is final settlement. So the degree of consolidation is a function of the time factor TV. So degree of consolidation is given but denoted by depends on F of TV. Please these things you remember very well. अब मैं जो ये पेज पढ़ाने जा रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स इसी पे बेस्ड है इस चैप्टर के. सो केयरफुली, पिछला शायद आपको तेजगीज एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया, तो इफ यू फॉलो दिस थिंग्स नो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर गेट एग्जाम आल्सो. गेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता. सो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड्स ऑन time factor. Now the time factor TV is a dimensional parameter and it is given by the formula, ये formula याद रखो, TV is equal to CVT by D square. CVT by D square. Okay, so CVB आप मालूम होगा आपको CVB कैसा देते हैं, हाँ इसका फॉर्मूला दिया हूं मैं आपको. TV is equal to CVT by D square, where D is equal to drainage path. एक बार आप टीवी निकाले, टीवी के बाद आप यू निकाल सकते, यू निकालने के बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन निकालते हो, अलग आगे की बात है. नाउ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग इट हियर, तो मुझे जरा स्लो जाने दो, अच्छी तरह आपको बताने दो, स्पेशली दिस टॉपिक, बिकॉज द एंटायर चैप्टर डिपेंड्स ऑन दीज फॉर्मूलेज ओनली. तो याद रखो, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड्स ऑन time factor, and time factor is given by CVT by D square, where D is equal to drainage path. The drainage path represents the maximum distance a water particle has to travel within the layer to reach a drainage face. When a clay layer is bounded by two drainage faces, double drainage occurs. When the clay layer is bound by a drainage face at one end and an impervious boundary at the other end, single drain. तो यहाँ पर what now the question arises is, what is D? Now the question arises is, what is D? D is drainage path. Drainage path means how much distance that water is traveling. So now in clay, of course consolidation is a almost all function of clay only. यहाँ sand में consolidation नहीं होता. तो clay में दो ends है जहां पर पानी आता जहां से निकलता, या ऊपर और नीचे, एंट्री और एग्जिट दो एंड है. क्या दोनों भी यहाँ पर डबल ड्रेनेज सिस्टम है या सिंगल ड्रेनेज सिस्टम है? दैट आल्सो यू शुड रिमेंबर. डबल ड्रेनेज सिस्टम मतलब दोनों एंड में पोरस है, वाटर कैन मूव, बट सिंगल ड्रेनेज मींस वाटर कैनॉट मूव, वन लेयर इज टोटली impervious. So that also you should remember. So after knowing that whether it is double drain or single drain, the D is given by, for the case of double drainage, D is given by H by 2, remember. And if it is single drain, D is taken as H as it is, where H is equal to thickness of layer. Don't worry, I will repeat once again all the things. This is very important. Again and again I am telling you. एक प्रॉब्लम करे तो आपको और क्लियर हो जाता. So for the case of double drainage, D is equal to H by 2. For the case of single drainage, D is equal to H.
where h is equal to thickness of layer, where h is equal to thickness of layer. And TV, as we know, time factor is given by TV is equal to CV T by D square. CV T by D square, where CV is given by this formula K upon MV into gamma W. अभी हम निकाले थे कोफिशिएंट इसमें तुम्हारे डेरिवेशन में. हाँ, CV क्या था? K divided by MV into. So TV is given by this formula. Remember, TV is given by this formula. Okay, so once again I will repeat the things. This is very important. So degree of consolidation, U in percentage, is given by any settlement, intermediate settlement, divided by final settlement into 100. So what is meant by here is U, that is degree of consolidation, depends on a factor, time factor TV. So degree of consolidation is the function of TV, and TV is given by, that is टाइम फैक्टर इज गिवन बाय CVT by D स्क्वायर. T तो टाइम रहता है, आपको मालूम है, कोई CV भी मालूम है. D क्या है? तो D ड्रेनेज पाथ है. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है. सिंगल ड्रेनेज है या डबल ड्रेनेज है. डबल ड्रेनेज अगर से है तो D इज इक्वल टू, आप क्या ले लो, H/2 ले लो. जितना थिकनेस है लेयर का उसका आधा ले लो. इसको अच्छी तरह याद रखो आप. अगर से सिंगल लेयर है, सिंगल ड्रेनेज है, तो आप D is equal to H ले लो. In the question clearly it is mentioned that whether it is single layer or it is double layer, whether it is single layer or it is double layer. For double drainage, D is equal to H/2. For single drainage, D is equal to H, where H is equal to thickness of layer. H is equal to thickness of layer, and time factor TV is given by this formula. D you have to decide. I hope now this much is clear to you. Once this is clear to you, now we have to find what is the value of TV. So TV or D kaisa denote karte? We notice that the time factor and hence the degree of consolidation depends on the following things: coefficient of permeability K, coefficient of volume compressibility MV, and the thickness of layer, the number of drainage faces, the number of drainage faces. देखो यहाँ पर सी टीवी किस पे डिपेंड कर रहा? टीवी के पे डिपेंड कर रहा. कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टीवी किस पे डिपेंड कर रहा? एमवी पे डिपेंड कर रहा, टी पे डिपेंड कर रहा, डी पे डिपेंड कर रहा. इन सभी वैल्यूज पे टीवी डिपेंड कर रहा. सो वी नोटिस दैट द टाइम फैक्टर and hence the degree of consolidation depends upon coefficient of permeability K, coefficient of volume compressibility MV, then thickness of layer, and then number of drainage faces. दो है या एक सिंगल ड्रेन, तो इन सभी बातों के ऊपर U डिपेंड करता. इन सभी बातों के ऊपर U डिपेंड करता. हाँ, यू शुड नो इट. एमसीक्यूज में यही याद रखना है. उसके बाद in addition, it is found to depend upon the consolidating pressure and its manner of distribution across the depth of layer. The time factor contains the physical constant influencing the time rate of consolidation. The values of time factor TV corresponding to the various values of degree of consolidation, U for the two type of drainage condition and different distribution. So this is the very important. So you remember, once first you have to calculate U, degree of consolidation. Degree of consolidation आप निकाले, अगर से ये less than 60% है, अगर से degree of consolidation less than 60% है, TV is given by a simple formula pi by 4 U by 100 whole square. When U is less than 60%, TV is given by pi by 4 U by 100 whole square. But when U is greater than 60%, ये less than 60% है, ये greater than 60% है. When U is greater than 60%, TV is given by this formula. It is a little bit difficult, but you have to remember. Or sometimes he may give in the question. So when U is less than 60%, TV is given by this formula.
टीवी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। याद रखो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर की जान है, यही क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। व्हेन यू, बाकी का सब तो थ्योरी है, ओवर कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये सब आप थ्योरी है, लिख सकते हो कुछ ना कुछ, बट दीज प्रॉब्लम्स यू शुड अंडरस्टैंड, these problems you should understand. Got it? Just a minute please. Okay, so when u is less than 60%, tv is given by area of circle, निकालते नहीं, pi by 4 d square, like this you remember. Okay, so when u is less than 60%, tv is equal to this much, and u is greater than 60%, tv is given by this lengthy formula, minus 0.9332 log 10, 1 minus u by 100 minus 0.0851. When u is less than 60%, ये formula है, when u is greater than 60%, ये formula है, ठीक है? So this is the things. उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट क्या है, बच्चे नहीं आते, यू पीपल नेवर शोज द इंटरेस्ट। सी व्हाट यू पीपल आर डूइंग, व्हाट आर योर एम, प्लान क्या है? यूनिवर्सिटी एग्जाम छोड़ो आप, यूनिवर्सिटी एग्जाम को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको खैरात में मिल रहा, जो दया की भीख पे जी रहे आप, ये जो पास हो रहे हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो प्लान होना ना, सब्जेक्ट सीखना ना। हम बहुत अच्छा नहीं पढ़ाए तो कुछ तो पढ़ाते आपको, एटलीस्ट यू विल गेट द डायरेक्शन। व्हाई डोंट यू अटेंड द क्लासेस? आई डोंट नो. This is very important. If you start yourself solving all these problems, you will face, I mean, difficulty. But if some teacher is guiding you, showing some path, at least he is telling you, it will be easier for you. Okay, anyway, it is your wish. Anyway, I have to complete the syllabus now. So now we will start the problems here, numericals here. So for that, please get the paper, pen and calculator with you. एंड रिमेंबर, यही गेट के क्वेश्चंस रहते। गेट के क्वेश्चंस कोई लंबे चौड़े ऐसे कुछ नहीं रहता। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कैसे भी प्रॉब्लम आप फटाफट कॉन्सेप्ट समझ के सॉल्व कर सके ना, देन इट विल बी वेरी इजी, देन इट विल बी वेरी इजी। Okay, now one by one questions we will start. Take down this question. In a consolidation test, a consolidation test is there. Wide ratio decreased from 0.7 to 0.65. Means initially even is 0.70 and the wides ratio decreased to 0.65. Even is 0.70, E2 is 0.65. When the load was changed from 50 to 100 kilonewton per meter square, मतलब लोड बढ़ते ही वाइड्स रेशियो कम होता है ना, नेचुरल है। जब आप लोड बढ़ा रहे, कॉम्पैक्शन ज्यादा होता, कंसोलिडेशन होता, तो डेंसिटी ज्यादा होता, डेंसिटी ज्यादा होने से वाइड्स रेशियो कम हो जाता। तो शुरू में वाइड्स रेशियो था 0.7, प्लीज न्यूमेरिकल सब इसके केयरफुली सुनो, शुरू में कितना था? 0.7. Now it has been changed to 0.65. E1 was 0.70, E2 is 0.65, and the load was changed from
50 kilonewton per meter square to 100 kilonewton, means sigma 1 is 50 and sigma 2 is 100 kilonewton per square. What he wants is what is compression index and what is coefficient of volume change, means what is Cc and what is mv. What is Cc and what is mv? Just a minute, please. Sorry, beta. So initially it was 50, now it is 100. So White's ratio was 0.7 and it is 0.65. Now Cc is given by, that is compression index is given by delta E by delta log sigma. Delta E by delta log sigma. So delta E is given by E1 minus E2. And delta log sigma is given by log sigma 2 minus log sigma 1. Cc is equal to E1 minus E2 divided by log sigma 2 minus log sigma 1. What is E1? 0.7. E2 0.65. Log, this is log sigma 2 by log sigma means log A minus log B is, if you remember, it is log A by B. Log A by B. And this is 0.7 minus 0.65 divided by log 100 by 50, that is log 2. Please calculate this one, and whether this answer is right, please tell me. Kara lokar. Find the Cc, compression index. .16 Anjum is saying, okay, is it right? Anjum, whether you have taken log base 10 or log E? Hello? Yes. लॉग बेस 10 है, ई है. स्नेहल, लॉग क्या लिए? एल एन लिए या लॉग लिए कैलकुलेटर में? वो मुझे log. हाँ, Log, sir. log 10. हाँ, Yes, sir. हाँ, ओके. सो दिस इज log 10. सो log ले लो अगर से कैलकुलेटर में, एंड cc इज गिवन बाय e1 माइनस e2 डिवाइडेड बाय दिस वन. सो ये एक फॉर्मूला अब वहां याद नहीं रहा तो कम से कम यहां तो रखो, compression index is given by this formula. Compression index is given by this formula. Got it? After this, what he has asked, what is coefficient of volume change? See, regarding syllabus, once again I will remind you, you never worry about the syllabus.
मैं सिलेबस अगर से यूनिवर्सिटी वाले पूछे तो एक दो दिन में फटाफट फटाफट बोल के खत्म करता हूँ। व्हाट आई वांट इज मैक्सिमम जितना भी हम पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। खत्म है, चौथा चैप्टर एक दो दिन में खत्म हो जाता। उसके बाद 5 शेयर स्ट्रेंथ है और 6 है। अभी 10 जनवरी तक टाइम है हमको। मुझे नहीं लगता कि 10 जनवरी से पहले आपकी एग्जाम होंगी। तो सिलेबस इस देयर, हम और रिवाइज करेंगे। हो सके तो एग्जाम और आगे गए तो गेट के क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के। दैट आल्सो वी विल डू। तो वो गेट के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी काम को आएंगे। गेट के क्वेश्चन करेंगे सिलेबस के बाद तो यूनिवर्सिटी को भी काम को आएंगे और गेट में भी काम को आएंगे। So now CC is given by this formula. So from this one you will get CC is equal to 0.166. 0.166. And then next is what is coefficient of volume change. Coefficient of volume change is given by mv, and mv is given by delta v by v naught into 1 upon this one delta sigma. Delta sigma, and delta v is given by, so here it is given by, delta v is given by this formula. Delta v naught is given by this formula, or better you remember directly this formula, that is mv is equal to delta E divided by 1 plus E naught 1 by delta. Delta means wherever it comes it is change. Here change in void ratio, here change in pressure. So change in void ratio is E1 minus E2, and change in pressure is equal to sigma 1 minus sigma 2. So now here 0.7 minus 0.65, 1 plus 0.7, 1 upon change in pressure कितना है, शुरू में 50 था, फिर 100, 100 minus 1. So only extra thing what you will get here is it is 1 plus E naught here. 1 plus E naught. Same thing, E1 minus E2 divided by this much. So same, यहाँ पर log नहीं आता, बस इतना ही. So this is the formula for M, and it is, if you calculate, substitute and please calculate and get it whether this is right, and it is in terms of M square per kilonewton. Whether this question have you understood, make the calculation yourself and then tell me the answer. Okay, Anju. So this is 5.88 into 10 to the power minus 4 meter square per kilonewton. Per kilonewton. Got it? I hope you understood this problem very well. तो इसमें दो चीजें याद रखो आप. Compression index is given by this formula, and mv is given by this formula. ये दोनों formula याद रखो और ये आपको पूछता है. See, in earlier cases, Snehal, instead of E1, we are used E0, but E1, E1, E2 or E0, E1 are the same thing. तर आम्ही काय करतो तर E नॉट केव्हा घेतो सांगू मी, जेव्हा प्रेशर स्टार्टिंगला राहतंय, झिरो राहतंय असं समजून सांगतो. बट देयर इज नो मच डिफरन्स. डेल्टा ई मीन्स यू कॅन टेक E1 minus E2 or E1 minus E2 or E naught minus E1, whatever it is. फक्त नाव चेंज आहे इथं, meaning is same. E naught we take when it is in the beginning, White's ratio is in the beginning. So same formula you remember. Okay. So now coming to second question. This question is very, very, very important. This question is very important. Take down this question. A soil sample 20 mm thick. A soil sample is there. It is 20 mm thick. Remember, I said that question pusta MCQ mein. A soil sample 20 mm thick takes 20 minutes to reach 20%. सभी 20 छे. Okay. A soil sample takes 20 mm thick. Sorry, a soil sample 20 mm thick takes 20 minutes. Time is 20. Thickness means Z or H is 20. Okay, H he has taken, and consolidation is 20%. Means degree of consolidation is 20%. Means U is equal to 20%. U is equal to 20%. Find the time taken for a clay layer.
6 मीटर थिक, 6 मीटर थिक टू रीच 40% कंसोलिडेशन। मतलब क्या है, अगर से ये 20 mm थिक है, मुझे 6 मीटर थिक चाहिए, मतलब ये क्या है, मॉडल है और वो 6 मीटर एक्चुअली फील्ड पर है। तो हम लेबोरेटरी में जब करेंगे 20 mm थिक लेके करेंगे 20 मिनट्स के लिए, तो 20% कंसोलिडेशन आपको मिलता। तो अगर से हम फील्ड पे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा हमें 6 मीटर थिक लेयर के लिए और 40% कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए। और क्लियरली बोल रहा, अज्यूम डबल ड्रेनेज इन बोथ केसेस। सो दोनों में, बोथ केसेस मतलब ऊपर भी नीचे भी ड्रेनेज की फैसिलिटी है यहाँ। तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज आस्किंग। सॉल्व मैं जल्दी कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। Soil sample 20 mm thick takes 20 minutes to reach 20% consolidation। तो ये टेस्ट एक बार लेबोरेटरी में करे, एक बार फील्ड में करे। जब लेबोरेटरी में करे 20 mm थिकनेस के लिए 20 मिनट लगा, क्या कंसोलिडेशन आने के लिए, 20% कंसोलिडेशन आने के लिए। मैं अब ये टेस्ट फील्ड पे कर रहा हूं और थिकनेस ले रहा हूं 6 मीटर, मतलब 6 मीटर थिकनेस के लिए। और कंसोलिडेशन कितना चाहिए मुझे, वो भी दिया, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 40% चाहिए। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 40% अचीव करने के लिए और 6 मीटर थिक लेयर के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए। याद रखो दोनों केसेस में डबल ड्रेनेज है, दोनों केसेस में डबल ड्रेनेज है। डबल ड्रेनेज रहने से क्या है, डी इज इक्वल टू क्या होता, H/2 होता। अगर से सिंगल ड्रेनेज रहता तो D इज टेकन एज H ओनली, D इज टेकन एज H ओनली, is taken as H only. A soil sample 20 mm thick takes 20 minutes to reach 20% consolidation। तो ये सारा दिया, तो फर्स्ट केस से हम क्या करना, ये सारा डाटा यूज करके सीवी निकालना। सेम मिट्टी है, चाहे वो लेबोरेटरी में करो चाहे फील्ड में करो, सीवी सेम रहेगा। वो सीवी लेके और क्या लेना है, ये कंसोलिडेशन लेके, ये थिकनेस लेके यहां पर हम निकालेंगे टाइम कितना है, यहां पर हम कितना निकालेंगे, टाइम कितना है, टाइम कितना है। ठीक है, सो प्लीज एक ब्रेक ले लो 2-4 मिनट का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।